It's a policy in which government does not interfere and will allow private business people to participate into the business activities without restrictions. यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ कंसर्न रहेगी एक ही चीज से, टैक्सेशन. टैक्स तुमने पे किया, हमको कुछ लेना देना नहीं है, जाओ पे. Rationality. In this market, there will be rationality. Buyer aims at maximum satisfaction and seller aims at profit maximization. Seller will aim to earn maximum profit. Buyer aims to earn maximum satisfaction. तो ये इस मार्केट के फीचर्स हैं. सम एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. ये थोड़े बहुत एग्जिस्टिंग होते हैं, बट रियलिटी में और एग्जांपल्स हमको नहीं मिल सकते. जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स, fruit markets and vegetable markets, jewelry market, milk market, or we can say dairy. Usually देखना सब जगह पे सेम प्राइस रहेगा. यूजुअली पहले ही बता दिया था मैंने, वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट. पहला वेजिटेबल था, अब ये फ्रूट मार्केट. गार्लैंड मार्केट और फ्लावर मार्केट. अभी यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. डिड यू नो दैट about 10 features may not be applicable to any single product in full way, in whole manner, it may not be applicable. And thus, perfect competition does not exist in reality. अभी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन. हमको पता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा. दूसरा पार्ट, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा. Other side, we observe that there exists which type of relations? Inverse relation. अभी सप्लाई के पार्ट में डिस्क्राइब करते हैं. प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा. प्राइस कम होगा, सप्लाई भी कम होगा. तो वहां पे हम देखेंगे there is direct relationship between price and supply. इन दोनों को कंबाइन करके, प्राइस एंड डिमांड एंड प्राइस एंड सप्लाई के इन पार्ट को कंबाइन करके will determine the price under perfect competition. Let us understand it with help of one example. We take up one schedule. Price, quantity demanded, quantity supplied. पहले प्राइस लेते हैं. अभी आप इस टेबल को ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करके बताओ प्राइस क्या हो रहा है. What is happening to the price? Let me know. कुछ नहीं हो रहा है ना प्राइस को. Price is rising. Very good. Price is rising. तो डिमांड क्या होना चाहिए अभी? What will happen to the demand? Fall. 200, 150, 100, 50. Right? अभी प्राइस राइज हो रहा है तो सप्लाई क्या होना चाहिए? राइज होना चाहिए. 50, 75, 100, 150.
Now here we observe one point. At one point, when we observe that price is rupees 20. What was the quantity demanded? Price is 20. Quantity demanded was 100 and quantity supplied was 100. So at rupees 20, we can see that quantity demanded was equal to quantity supplied. Quantity demanded is equal to quantity supplied. So price 20 would be called as equilibrium price. Price 20 would be called as equilibrium price. आपने दोनों पेपर पब्लिश किए ना? इसी को जब हम ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे y axis, x axis, y axis is price axis, x axis पे quantity demanded and quantity supplied रहेगा. देखो जब हम डिमांड कर्व बनाएंगे डी विल बी द डिमांड कर्व एंड एस वुड बी द सप्लाई कर्व. मैंने प्लॉट नहीं किया, डायरेक्ट बना दिया है. आपको पता है दैट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. राइट? Now you observe that the demand curve and supply curve and supply curve are intersecting at one point. Let us name that point as point E. Demand curve and supply curve are intersecting at point E, where demand is equal to supply. तो वहां पे जो प्राइस प्रिवेल हो रहा है 20 एंड जो क्वांटिटी प्रिवेल हो रहा है वो है 100. That would be called as equilibrium price and equilibrium quantity. उसके पहले इक्विलिब्रियम के पहले देखो डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है और इक्विलिब्रियम के बाद में देखो डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है. इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. At point E, we call that point as equilibrium point. Why it is called equilibrium point? Can you help me to know why it is called equilibrium point? Wrong. Smith Gala, your answer is wrong. Riya Boyd, your answer is absolutely correct. As quantity demanded and supplied are same. Kanak, you also gave the correct answer. Shubham, your answer is also correct. Nishad Praveen, check. Price 20 है and supply 100 है. Price is equal to supply.
आपने वही लिखा ऊपर, प्राइस इज इक्वल टू सप्लाई। It is equilibrium point because at that point demand is equal to supply. So as I said, rupees 20 would be called as equilibrium price, and 100 units will be called as equilibrium quantity. फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट अपना यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कोई डाउट है किसी को? Any doubts in perfect competition? मैंने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको 10 अलग अलग फीचर्स बताए। रिमेंबर कि वो 10 फीचर्स में से पहले 4 फीचर इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला फीचर था, पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। दूसरा फीचर था लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तीसरा फीचर था होमोजीनियस प्रोडक्ट। एंड चौथा फीचर था फ्री एंट्री एंड एग्जिट, राइट। और उसके अलावा और बहुत से फीचर्स देखे। बट जब हम देखेंगे कि किसी मार्केट में वो 10 के 10 फीचर्स प्रेजेंट रहेंगे, देन इट वुड बी परफेक्ट कंपटीशन। बट यूजुअली मार्केट में पहले 4 फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से 4 मैं भूल गया? कौन से 4 मैं भूल गया? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, large number of sellers, homogeneous product, and free entry and exit। तो ये 4 फीचर्स जिसमें प्रेजेंट रहेंगे, सिर्फ ये 4 ही फीचर, then that market shall be called as pure competition, P-U-R-E. It would be called as pure competition. Is that concept clear to all of you? Now we describe the second form of market, which is called as monopoly. मैंने पहले ही इसके बारे में आपको कुछ बताया था। टाइप्स ऑफ मार्केट डिस्क्राइब करना चालू किया था, तभी मैंने बताया था आपको। वन सेलर, वेरी गुड। मोनो मतलब वन, पोली मतलब सेलर, अ मार्केट विथ वन सेलर। It has been derived from
two Greek words, mono and polis. Monos मतलब single and polis मतलब seller. Market with a single seller. Market which will have a single seller will be called as monopoly market, and that seller would be called as monopolist. So remember, as in a monopoly market, there exists a single seller, there will be no competition into the market. In a monopoly market, there will be no competition. Seller will be considered as a king of the market. Let us describe features of monopoly. देखो कितना fantastic picture है. क्रिसमस ईव, न्यू ईयर ईव, वहां पे दिख के आता है अपने को. The first feature, single seller. Only one seller exists into this market. Firm and industry would be the same. Monopoly firm, in a monopoly market, firm and industry are one and the same. ये एक important point आपको याद रखना है. दूसरा, no substitutes. There are no close substitutes for the product. आपको सिंगल सेलर के प्रोडक्ट से ही अपने वांट्स को मैनेज करना पड़ेगा. either you manage with that product or you buy his product. Either you will have to buy that product or you will have to manage without the product. No close substitutes. Absence of competition. No competition into this market, as there exists single seller into the market. Unique commodity. The products are absolutely different. They are unique. मार्केट में ये प्रोडक्ट और किसी के पास अवेलेबल नहीं रहेगा. मोनोपोलिस्ट का प्रोडक्ट अलग से दिख के ही आ जाएगा. जैसे इस एग्जांपल में आपके स्क्रीन पे जो मैंने बताया है कि अलग अलग सेलर्स के प्रोडक्ट रिप्रेजेंट द रेड बलून्स, बट मोनोपोली का प्रोडक्ट सबसे हट के आ जाएगा, ग्रीन बलून. मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर. देखो परफेक्ट कंपटीशन में मैंने आपको बताया था that a seller in a perfect competitive market was a price taker, but यहाँ पे he is a price maker. What does that imply? What does that imply? A seller is a price maker. इसका implication क्या रहेगा? इसका implication ये रहेगा that he decides the price of the product. He will decide the price of its product. The seller will decide the price. And as he is deciding the price, he is a price maker and he is not a price taker. तो याद रखो, seller can either fix the price or he can fix the output. But he cannot fix both the things at the same time. ये एक बहुत important part है. In a monopoly market, seller price भी decide कर सकता है, output भी decide करेगा. But ये दोनों powers वो simultaneously use नहीं कर सकता. The seller can either decide the price or he can decide the output. He cannot decide both at the same time.
No free entry and exit. Entry of the new firm into this market is blocked, is restricted. Restrict करके रखा इसके लिए तो इसके अंदर और कोई सेलर नहीं आता है. Restrictions can be like legal restrictions, they can be technological restrictions, natural restrictions. बहुत से अलग अलग तरह के restrictions होते हैं जिसके वजह से इस मार्केट में और नए सेलर्स नहीं बनते. Therefore, there are no rivals. Absence of selling cost. Selling cost का मतलब क्या है? कोई बताएगा? What does that mean? बताओ, selling cost का meaning बताओ. The cost which is incurred to sell the product. The cost which is incurred to sell the product. जैसे आप लोगों ने करेक्ट बताया, advertising expense, etc. Advertisement पे, sales exhibition पे हम लोग जो भी खर्चा करेंगे, all those expenses shall be considered as selling cost. So remember that in a monopoly market, there is no selling cost. Why? Why the seller will not incur such expense? Tell me. उसके पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं है. वेरी गुड. सिंगल सेलर है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो उसको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है. Inelastic demand curve. The demand curve of the seller of the product in a perfect monopolist market would be inelastic in nature. The product demand in monopoly, there is no substitute. Therefore, inelastic demand. It would always be steeper demand curve. It would be a steeper demand curve. Price can change largely, but the demand will change slightly. Demand will respond less than proportionately to the given change in price. Are those features clear to all of you? Just go through it once, then I'll get back again with types of monopoly. And after completing types of monopoly, we'll conclude with the session for today. Go through the features of monopoly once.